Those who have joined now, Maimuna, please try this question. First of all, convert it to structure and then count the number of pi and sigma bonds. Take 2 more minutes. Take 2 more minutes. Okay, Farhat. Let us see some other answers. Huh? Explain this question. Okay. Alan, your answer is like that can never be the answer, no? Also, Mamuna, please, आप भी एक बार देखिए, how are you answering that? I mean, there is one option and which is very clear. You don't even have to make structure, I would say, rather. You don't even have to make the structure and you would understand what is the correct answer. Yes, ma'am, correct. Focus on these two things. 2 in, 4 in. Okay? 2 in का क्या मतलब हुआ? There is a one double bond. And 4 in का क्या मतलब हुआ? There is one triple bond. Now, in a double bond, how many pi bonds do we have? We have one pi bond in a double bond. एक pi होता है, एक sigma होता है. In a triple bond, how many pi bonds do we have? We have 2 pi bonds. So in total, how many pi bonds would be there? There will be 3 pi bonds in the structure. And the only option which 3 pi bond is, with 3 pi bond is the C option. Is it clear? Yes or no? Please tell me, all of you. Maimuna, Hiba, Farhat, Alan. सबको clear है? Yes or no? Yes, sir. Okay, great. Aksa, you are again late. Please copy this question. Screenshot ले लीजिए. We'll wait a few seconds. Okay. Try this question. Take 1 more minute. I don't know what kind of logic you're applying here. Don't really understand. चलिए ठीक है फिर भी.
Guys, please see यहाँ पे all the bonds here, as you can see, कार्बन और किसके बीच में है? क्लोरीन के बीच में है। ठीक है, स्टार्ट से यहाँ से देखते हैं, कार्बन और फ्लोरीन के बीच में है। Then you have carbon chlorine bond, then you have carbon bromine bond, and then you have carbon and iodine bond. In carbon, what is the orbital that is taking part in the bond formation? It will be the sp3 hybridized orbital, and that sp3 will be made up of what? 2p, second period ka element, right? Now this fluorine is also 2p, chlorine is 3p, bromine is 4p, and iodine is 5p. So the extent of overlapping will be maximum in what? Extent of overlapping will be maximum in carbon and fluorine, because both of them belong to the same group. Both of them belong to the same group. Okay? Now, if the extent of overlapping is highest in carbon and fluorine, that means it is going to take largest amount of energy to break it. Okay? And then CCl, then CBr, and then Ci. So the correct option here, it is going to be C, normal. Okay? Now please write this. Wait a second. Strength of covalent bond में कुछ भी आए, then you are going to follow this. ठीक है? Strength of covalent bond directly proportional to the extent of overlapping. ठीक है? And the nature of orbit, the bond strength किस पे depend करेगा? Inversely proportional to the number of shell. ठीक है? If it is between 1-1, then it is going to be strongest. 1-2 के बीच में तब वो क्या हो जाएगा? Then it is going to be next one. Then 2-2, then 2-3, then 2-4, 2-5, like this. And these are the only exception which happens because of lone pair exception, lone pair repulsion. ठीक है? Chlorine and chlorine का क्या होता है? ज़्यादा होता है, then bromine and bromine, then fluorine and fluorine, and then I2. Please write this down. अच्छा, इसके अलावा ना, done everyone? Yes or no, please tell me. All of you wrote this down? The strength of covalent bond and this correct sequence of bond enthalpy for CX bond. Saf, please be on time. You're again late. Not again, but you're late this time. Yes, sir. I hope you have written this down. Now try this question. Take 2 minutes for this question, and then I will explain how to do this type of question. This is very important. Please pay attention to this type of question, okay? Because what you are going to grasp after this question will be very important for Vesper theory. You should know what is the number of lone pair electrons when you look at a particular compound. आपको पता होना चाहिए what is the number of lone pair electrons.
Okay, I've got one answer. Okay, yeah, yes, correct, Farad, very good. Correct. Chaliye. Please see here, guys. You have to know what is the number of lone pair electrons on the central atom. ठीक है? ये चीज इंपॉर्टेंट है, आगे की चीज, आगे भी जो सवाल आएंगे उनके लिए. You have to know what is the number of lone pair electron. First of all, you will look at the central atom. Chlorine is my central atom, and you have to know what is the valence electrons of chlorine. How will you know what is the number of valence electron of chlorine of any central atom? Whatever the group number it is, right? If it is group 1, then number of valence electron will be 1. If it is group 2, then the valence electron will be 2. अब उसके बाद आ जाता है क्या, डी ब्लॉक एलिमेंट्स. देन यू आर गोइंग टू ग्रुप 13, राइट? आफ्टर 1 2 you are going directly going to group number 13. Now in 13, 3 is my valence electron. Then for 14, 4 is my valence electron. For 15, 5 is my number of valence electron. 16 में 6 valence electron, 17 में 7 valence electron, and 18 में 8 valence electron. Okay. Now as we all know, chlorine is a part of. अब ये सारी चीजें क्या है, आपको periodic table पता होना चाहिए. If you don't remember the periodic table, you will not know which group किस group में है ना, and you will not know what is the valence electron. So chlorine belongs to group number 17, and the number of valence electron in chlorine is equal to 7. So number of valence electron is equal to 7. Next thing that you have to understand is what is the number of surrounding atoms. Now, how many atoms are surrounding chlorine? So how many atoms are surrounding chlorine? There are 3 atoms. Number of surrounding atoms. Okay? Number of surrounding atoms is equal to 3. Then you should know one more thing. What is the valency of the number of surrounding atoms? Valency of surrounding atom. This is going to be equal to 1 because fluorine makes one bond. Single bond बनाने की क्षमता रखता है. Fluorine can only make a single bond. So fluorine is making single bond. What is the valency of surrounding atom? 1. Now, number of lone pairs, not lone pair electrons, but rather number of lone pairs is equal to the number of valence electron minus the surrounding atom multiplied by valency divided by 2. So if V is equal to 7 minus surrounding atom is equal to how much? 3 surrounding atom, and the valency is equal to 1. So 7 minus 3 divided by 2. 4 by 2 will be equal to 2. ठीक है? Now this is your answer. है ना? अब ये सारी चीजें जो है ना, all of these things should be happening in your mind, और आप element compound देख के आपको पता होना चाहिए how many lone pair of electrons are present in that particular molecule. Okay, so this all things should be inside your head. चलिए, please write this down. And this is going to be very important in order to get the structure of a particular compound. Structure, hybridization, geometry, सब में important है. Number of lone pair electrons. Please write this down. I hope everyone is done. Right, next. Concept of steric number and how to get the hybridization, electronic geometry and the structure of a particular structure. ठीक है? एक molecule दिया हुआ है आपके, compound दिया हुआ है, you have to, and you have been asked what is the structure of it, what is the hybridization, कैसे पता चलेगा? All of these things.
So what you should know, first of all, the number of surrounding atoms plus number of lone pair electrons. Now, number of surrounding atoms में आपको ये number of surrounding atoms plus the number of lone pair electrons ये आपको पता होना चाहिए. How many surrounding atoms are present and how many lone pair of electrons are present. ये पता रहना चाहिए. Add both of them and you will get what? And you are going to get the steric number. ठीक है? First of all is that. Let us suppose the steric number is 2. For example, steric number मान लीजिए किसी का 1 है ना? जैसे आपके पास H2 है, तो हाइड्रोजन है, इसमें सिर्फ 1 सराउंडिंग एटम है, देयर इज 0 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इफ यू हैव हाइड्रोजन H2, तो इसमें बस एक ही स्ट्रक्चर बन सकता है क्या? व्हेन द सराउंडिंग एटम इज 1, एक ही स्ट्रक्चर बन सकता है, दिस इज लीनियर, है ना? एक एटम यहाँ पे आ जाएगा, दूसरा एटम यहाँ पे आ जाएगा. नाउ समथिंग स्टार्ट टू हैपन व्हेन यू हैव स्टेट नंबर 2. स्टेट नंबर 2 में टोटल 3 एटम्स है, 1 सराउंडिंग, सॉरी 1 सेंट्रल एटम एंड 2 सराउंडिंग एटम्स है. ठीक है? इन स्टेरिक नंबर 2 द हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp. These 3 things you have to remember: steric number, hybridization and electronic geometry. अब जैसे ही आप इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री को रखिएगा, you have A and you add here B and you will add here B. Why have I added here B? Because this is the electronic geometry. The electrons are present here and here. Then obviously the atom which is bonded will also be present here and here. ठीक है? So this is going to come logically. Electronic geometry से structure कहाँ से आएगा? It will become logical. Now steric number when it is 3, please see here. When the steric number is 3, steric number जब 3 है तो आपके पास क्या स्ट्रक्चर है? A. These are my electron domains or these are my places or positions where the electron is present. ठीक है? Now let us suppose I have 3 surrounding atoms. That means we have 0 lone pair electrons. Then I will add B here, here, and here. Now this whole thing is in one plane. That is why my structure will be same as that of electronic geometry, and it will become what? And it is going to be trigonal planar. But let us suppose we have only 2 atoms and there is a lone pair electron. Now when we have 2 atoms and there is a lone pair electron, in structure you have to see only atoms. And when you are going to see atoms, you will see a bent type of structure like this. And that is why when you add 1 lone pair, you will get a bent type of structure. Next is we have the sp. We have the 4 steric number, hybridization is sp3, and the electronic geometry is going to be, my electrons will be present in a tetrahedral fashion like this. You can make this bold and dash, telling that this is out of the plane, that is inside the plane, and these 2 are on the plane. Now, when I don't have any lone pair of electrons, my atoms will be B, 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 and B. And in this case, the electronic geometry and the structure are going to be completely same. But as soon as I remove an atom and add a lone pair instead, तभी क्या हमारे पास 1 lone pair and 3 atoms, steric number still is 4. Now, in this case, what is going to happen? You will get a structure which is going to be pyramidal. This is a pyramidal structure. Okay. So what you are going to get? You are going to get a pyramid whose base is trigonal, and that is why it is trigonal pyramidal. It is what? Trigonal. ये triangle बनाया हमने. Trigonal pyramidal. Now, if you add 1 more electron here, if you add 1 more lone pair of electron, removing an atom, I've added 1 more electron. Now, in this case, you can see there is a bent type of structure. इस तरह का structure है हमारे पास, which is what? Which is bent type of structure. ठीक है? Next, we have the 4th case, that is for dsp2. This will be specifically for coordination का bonds वहीं पे आएगा, but still you write a square planar structure हो सकता है dsp2 के configuration में. Match the following में कहीं आ गया dsp2 में कौन सा होगा, then you can write square planar structure. Now what about the coordination number, steric number 5? When you have steric number 5, the hybridization is sp3d and the electronic geometry is trigonal bipyramidal. Now special thing about trigonal bipyramidal is that it has 2 different types of bonds. Now this is my electron domains, or these are the places where the electrons are present. This is my electronic geometry. We have a triangle and it can make pyramids on the top and on the below also. That is why it is trigonal bipyramidal. Bi means 2 pyramids. Now when we don't have any lone pair of electrons, then we will have 5 B atoms which will be surrounding the central atom and making the structure also trigonal bipyramidal. Now, as soon as you are going to add an electron, a lone pair of electron, you have 2 different choices. What are the choices? We have these 3 which are equatorial, and then we have these 2 bonds which are going to be axial bonds. Now, what is the difference between equatorial bonds and the axial bonds? First thing is that, see, the equatorial bonds are 120 degrees. Okay? And the distance between axial and equatorial is what? It is 90 degrees.
Just a second, guys. Okay, sorry for that. So I was talking about the axial and equatorial structure. ठीक है. Now, what do you think which is more prominent? अब यहाँ पे आप लोग आंसर कीजिए, इतना देर चुपचाप स्पीकिंग होगा. Tell me what is more prominent. What is smaller? कहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होगा, 90 डिग्री और 120 डिग्री? Tell me which one should I consider? If I'm considering the repulsion of electrons, I should consider the 90 degree or 120 degree. Tell me, guys. 120. 120. What about others? What should I? कहाँ पे ज्यादा होगा? Which will be greater? As all of you know, electrons are what? Electrons are negatively charged species, and if they are closer together, then they will be having higher repulsion. तो हमको हाइयर रिपल्शन वाला बता दीजिए, कहाँ पे हाइयर रिपल्शन हम उसी को कंसिडर करेंगे. जहाँ पे कम रिपल्शन हो रहा है उसको भी हम छोड़ देते. Why? Because कम रिपल्शन को हम लोग को टैकल नहीं करना. I have to tackle the higher repulsion. Higher repulsion को कम करना. I have to minimize the higher repulsion cases. Tell me, guys, which one should I consider, 120 or 90? What do you think is nearer to each other? 90 डिग्री ज्यादा नियर होता है या 120 ज्यादा नियर? 90 degrees. 90 degrees is near ना, इवन तो देखने में नहीं लग रहा हो आपको, कि आपको लग रहा हो कि 120 डिग्री ज्यादा नजदीक है क्योंकि हमने वहां पे 120 डिग्री बनाया. बट दिस इज इनसाइड द प्लेन एंड दैट इज आउटसाइड द प्लेन. इफ आई टॉक अबाउट दिस 120 डिग्री, आपको बिल्कुल पता चल रहा होगा दैट 120 डिग्रीज एंगल आर फर्दर अवे, 90 डिग्री वाले क्या है, नजदीक नजदीक. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द एक्सियल बॉन्ड्स, इफ यू टॉक अबाउट द एक्सियल बॉन्ड, नाउ दिस वन एक्सियल बॉन्ड, द रेड वन, it is having a 90 degree angle with 1, 2 and 3. All of them are what? 90 degree, because क्या है, this is in one plane. एक तरह का plane है यहाँ पे, and यहाँ पे 90 degree पे axial वाले, right? So all of it is making how many bonds? It is making 3 different 90 degrees bond, ठीक है, which is with the axial one, which is with the equatorial and axial के बीच में. Okay, what does that mean? That means the axial one is facing more repulsion. अच्छा, let us talk about this equatorial one. Equatorial one is having a 90 degree angle only with 1 and 2. ठीक है, तो इक्वेटोरियल वाले के पास कितना 90 डिग्री है? 2 90 डिग्री वाले के. एक्सियल वाले में कितना 90 डिग्री है? देयर इज 3 90 डिग्री. So obviously we can say that the axial one is what? The axial one is facing more electron repulsion, and that is why it is not suitable for placing lone pair of electrons. I'm going to place the lone pair of electrons where it is going to force the least repulsion. तो least repulsion कहाँ पे होगा? इक्वेटोरियल वाले में, क्योंकि वहां पे सिर्फ 2 ही बार 90 डिग्री आ रहा है. एक्सियल में we are facing 390 degrees. Okay, now what I'm going to do, I'm going to place one lone pair electron on the equatorial one, not the axial one. So axial में कभी भी आप नहीं डालिएगा इलेक्ट्रॉन को, lone pair electron को कहाँ डालिएगा? In the equatorial one. So I will get B, B, B and B. If you are going to flip the structure, you will see something like this, and which is a shape of seesaw. So from trigonal bipyramidal, if you add one lone pair electron, then you will get seesaw. And when you are going to add 2 lone pair of electrons, it doesn't matter ना, ये तीनों green वाले तो same ही है, right? Just to show you guys, I'm adding the B here and the 2 lone pair of electrons here. And in this case, you can see that if you invert it a bit, you will see a T shape. Okay? Now what you have seen a T shape. Seesaw, you add one more lone pair, you will get a T shape. And if you add one more lone pair, you are going to get a linear structure. This is a linear structure, right? Okay, so trigonal bipyramidal, you add a lone pair electron, you will get a seesaw structure. You add one more lone pair, that means if you have 2 lone pair electrons, you will get a T shape. When you have one more lone pair, that means there are 3 lone pair of electrons, and you are going to get a linear structure. Now, let us look at the case of octahedral, in which we have sp3d2 hybridization. The electronic geometry is octahedral, and the steric number is 6. Number of surrounding atoms plus the number of lone pair electrons is equal to 6. In that case, we have octahedral.
Now in the case of octahedral, all the bonds are same. ठीक है, कोई भी बॉन्ड यहाँ पे अलग नहीं। अब इस केस में हम आपको बहुत ज्यादा तावील से समझाया जा सकता है, बट टाइम नहीं है, है ना। अदरवाइज आई विल शो यू गाइस ऑल दी स्ट्रक्चर्स, ऑल दी बॉन्ड्स आर व्हाट, ऑल दी बॉन्ड्स आर सेम। आप बहुत ही ज्यादा ये, इट इज अ वेरी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, आप इसको किसी भी ओरिएंटेशन में लगाइएगा, इट इज गोइंग टू बी सेम। नाउ all of you know, if you are going to have the 6 surrounding atoms and there is 0 lone pair of electrons, in that case the electronic geometry and the structures will be same, that is going to be octahedral. Now if I am going to add one lone pair, ठीक है, so now lone pair can be anywhere, but हम आपको इस, I'm adding in that place which is more easier for you to understand and see. In this case what you can see, there is a square planar type of base, ठीक है, and then you have a pyramid like this. Now, in this case, what we have made a square pyramidal type of structure. Now, if you add one more lone pair here, and this is also a lone pair. Now, in this case, you have made what, a square planar structure, because ऊपर में आपके पास कोई भी atoms नहीं है. Structure is related to what, only atoms. ठीक है, स्ट्रक्चर किससे रिलेटेड है, एटम से रिलेटेड है, उसको इलेक्ट्रॉन से लेना देना नहीं है कि कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन है. It is only looking at the structure. Electronic geometry looks at all the electrons, चाहे वो बॉन्ड पेयर हो और इट इज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, सारे को देखता है. ठीक है, चलिए प्लीज राइट दिस थिंग डाउन. इफ यू हैव डाउट इन एनी वन ऑफ देम, प्लीज लेट मी नो नाउ, अदरवाइज वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चंस. Let me know once you're done, guys.
प्लीज लेट मी नो वंस यू डन, ठीक है, ज्यादा टाइम मत लगाइएगा, लेट मी नो वंस यू डन। Yes, sir, done. डन, ठीक है, ठीक है। देखिए सराउंडिंग एटम्स तो आपको दिख जाएंगे, और लोन पेयर्स अभी हमने बताया किस तरह से कैलकुलेट करना रहता है, ठीक है। ट्राई दिस क्वेश्चन। हाँ, अब दूसरा है, ये जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल सबका डिटरमाइन ही करें। इफ यू रिमेंबर द स्ट्रक्चर, अगर आपको शेप पता है, स्ट्रक्चर का पता है कैसा है, तो फिर अगर याद है तो उसको लगा दीजिए आप ऑप्शन में करेक्ट, ठीक है। जरूरी नहीं कि सब में आप डिटरमाइन ही कीजिए। फॉर एग्जाम्पल NH3, आई होप ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ NH3, ठीक है, शेप क्या है NH3 का, आई होप सबको पता होगा, ठीक है। सो PCl5 का पता होना चाहिए आप लोगों को, एटलीस्ट A और C का, है ना। अब A और C में आपके पास 3 3 C में 2, हाँ A और C का पता रहेगा तो आप एक ऑप्शन करेक्ट कर सकते हैं। चलिए ट्राई, टेक 2 minutes, नॉट मोर देन 2 minutes। चलिए 2 minutes आर ओवर, है ना। I have received only one answer. I hope, चलिए ठीक है। NH3 का देख लीजिए आप लोग, NH3 has number of valence, अच्छा एक और ऑप्शन आया फॉर, ओके फाइन, ओके वन मोर ऑप्शन, ठीक है, आई थिंक दैट इज करेक्ट। देखते हैं, नाइट्रोजन हैज 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस द नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम इज इक्वल टू 3, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 5 minus 3, that is equal to 2 divided by 2, which is equal to 1, that is number of lone pair electrons is equal to 1, surrounding atom is equal to 3 plus 1 is equal to 4, that means आपके पास होगा sp3, sp3 में होगा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, एक लोन पेयर ऐड कर देने से क्या हो जाएगा आपके पास, यू विल गेट ट्राइगोनल पिरामिडल, दैट मींस ए का है क्या ऑप्शन, ए का है 3, ठीक है। ClF3 आपने अभी देखा था, इन ClF3 how many lone pair electrons were present, there were 2 lone pair electrons, so we have 3 surrounding atoms plus 2 lone pair, that is equal to 5, 5 में आपके पास आ जाएगा क्या, 5 में आ जाएगा आपके पास sp3d, which is ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, है ना, TBP स्ट्रक्चर है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में एक लोन पेयर आने पे क्या होता है, यू आर गोइंग टू हैव सीसॉ, बट वी हैव 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, एक और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ जाने में क्या हो जाएगा आपके पास, टी शेप आ जाएगा, ठीक है। तो बी का ऑप्शन क्या होगा, टी शेप, दैट इज 4, तो 3 4 कहीं पे है, 3 4 यहाँ भी है, 3 4 यहाँ भी है, एंड ठीक है, इट इज आइदर ए और इट इज सी। अब देखते हैं सी स्ट्रक्चर, सी स्ट्रक्चर है PCl5,
PCl5, phosphorus is in the group of nitrogen. It is also having 5. 5 minus 5 will be equal to 0. Divided by 2, it will equal to 0. So lone pair electron in PCl5 will be equal to 0. Lone pair is electron is equal to 0. You have surrounding atom is equal to 5. That means you have sp3d, which is trigonal bipyramidal. तो C का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? TBP, trigonal bipyramidal, यानी कि it is 2. तो C वाला करेक्ट. ओके, चलिए राइट दिस थिंग डाउन. और BrF5 पे जानना है आपको. सो BrF5 has how many? BrF5 has, bromine has 7 valence electron. 5 उसमें आपके पास क्या है? Surrounding atoms हैं. 7 minus 5 will be equal to 2 divided by 2, which will be equal to 1. So 5 plus 1 we have what? 6. 6 का मतलब होता है क्या? sp3d2. इसका मतलब होता है octahedral. If you add one lone pair in octahedral, as you see, you have one lone pair. Octahedral में एक lone pair add कर दीजिए. What will you get? You are going to get trigonal pyramid. नहीं, square pyramidal. है ना? You will get square pyramidal. So B का हो जाएगा आपके पास 1. चलिए इसी तरह से ट्राई कीजिए इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें तो काफी चीजें तो सेम आ गई हैं, है ना? चलिए फिर भी ट्राई कीजिए. इसमें कम से कम सही आना चाहिए आपका आंसर. Again take 2 minutes, not more than 2 minutes. Okay, I've got one answer. SAF. Yes, SAF correct. Very good. आसान हो गया ये सवाल, है ना? Because last question was very similar. Yes, हिबा correct. Very good. हिबा आपका पिछला वाला भी सही था. Okay, nice. 2 minutes are over. Oh, फरहत नहीं, मिस्टेक हो गया फरहत आपसे तो. See here guys, PCl5 हमने अभी देखा. PCl5 का क्या स्ट्रक्चर था? PCl5 was trigonal bipyramidal. Then SF6, sulfur, it is having 6 valence electron because it is in the 16th group, just below oxygen. ठीक है, oxygen में भी 6 valence electron, sulfur में भी 6 valence electron. Surrounding atom is also equal to 6. That means it is going to have what? 0 valence, 0 lone pair electrons. ठीक है. Now we have 6. That means octahedral. SF6 का क्या हो जाएगा? SF6 will be octahedral. ठीक है. And then we have BrF5. BrF5 का आपने अभी देखा था. Just now we saw BrF5 was square pyramidal. ठीक है. तो A का हो जाएगा क्या? TBP. That is 4th. तो ऑप्शन A करेक्ट हो सकता है और B करेक्ट हो सकता है. बाकी वाले सही नहीं हो सकते. Then B is SF6 is octahedral. B में दोनों ही सेम है. 1 2 3. और C में we have BrF5 और BrF5 का क्या है? BrF5 का square pyramidal 1 है. तो करेक्ट ऑप्शन इज B. B is the correct one.
ट्राइगोनल प्लेन में कैसे लिख दिया फरहत आपने? इट विल बी स्क्वायर पिरामिडल ना फरहत? Yes, sir. चलिए write this down. Try this question. Amongst the following, which one will have maximum lone pair electron repulsion? ठीक है, जस्ट अ हिंट, मैक्सिमम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कहां पे होगा? सबसे पहले आप देखिएगा नंबर ऑफ लोन पेयर्स, जहां पे नंबर ऑफ लोन पेयर ज्यादा वहां पे लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा। अगर कहीं पे नंबर ऑफ लोन पेयर इक्वल आ जाए देन यू विल लुक एट द एंगल बिटवीन देम। एंगल कम तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन ज्यादा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, and on the basis of number of lone pair electrons, which is going to have the maximum lone pair electronic repulsion, and if that becomes equal for a case, then look at the angle between them. आगे टेक 3 मिनट ले लीजिए इसके लिए, इसमें आपको सबका कैलकुलेट करना पड़ेगा लोन पेयर, है ना? टेक 3 मिनट्स। Okay guys, waiting क्या हो गया? 3 मिनट हो गए, but no answer. This here guys, CLF3 आपने देखा था अभी, it is what? 7 minus 3 divided by 2, that is equal to how much? 7 minus 3, that's 4 divided by 2, 2 lone pair electrons. IF5 में देख लीजिए, iodine is what again? 7, है ना? Valence electron 7 minus 5 divided by 2, that is equal to 1 valence electron.
SF4 में देखें, we have 6 valence electron, 4 surrounding atoms, divided by 2, 6 minus 4, that is equal to 2, divided by 1, divided by 2, that is equal to 1. Xenon, and then we have F2. Xenon is having 8 valence electron because it is one of the noble gases, minus 2, that is the number of surrounding atoms, divided by 2. So 8 minus 2, that is equal to 6, divided by 2, that is equal to 3. So the maximum number of lone pair electrons are in xenon. That is why this is going to be the one with maximum lone pair electronic repulsion. Please write it down, guys. All of you understood this? Yes or no? Please tell me. Alan, Farhat, Hiba, Yes, Maimuna, sir. Said. Yes? Okay. Maimuna, आपको समझ में आया? Yes, sir. Okay. चलिए try next one. Guys, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, बहुत ही आसान सवाल है. बोरॉन है, फ्लोरीन है, सप्लीनर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड. Hybridization and the number of elements around the central atom respectively are. एक काम कीजिए, एक सेकेंड. नंबर ऑफ ये इलेक्ट्रॉन्स होगा, एलिमेंट्स नहीं होगा. टाइपिंग मिस्टेक है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा अराउंड द सेंट्रल एटम. BF3 में हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर लीजिए, स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करने के बाद. इतना टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें. बताइए. दिस इज व्हाट? दिस इज इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ऑफ ऑल. यस, करेक्ट, वेरी गुड. बोरॉन, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ बोरॉन? एटॉमिक नंबर होता है बोरॉन कितना? 5 होता है, राइट? यस और नो? Yes. Yeah, 5. What is the valence electron? 13 ग्रुप का है, तो we have 3 valence electron. 3 minus 3 divided by 2, that is equal to 0. तो number of lone pair कितने हो गए? Lone pair it is equal to 0 हो गए. ठीक है? That means how many bond pair do we have? Bond pair है हमारे पास कितना? 6. Bond pair हमारे पास है 3. 3 bonds बन रहे हैं, यानी कि 3 bond pair है. That means number of electron कितने हो गए?
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके पास 6। अच्छा, अब इसका स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा? स्टेरिक नंबर भी 3 है, 3 के लिए क्या होता है? sp2 एंड 6। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। यस, है करेक्ट ऑप्शन। हाँ, इसमें देख लीजिए पोलैरिटी में आप लोग एक चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है? डाइपोल मोमेंट के बारे में ट्राई कीजिए इसको जरा। Sir, can you scroll up a little bit? Yes, sir, done. क्योंकि इन सब में आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। हाँ, व्हाट इज द स्ट्रक्चर हियर? NO2 का स्ट्रक्चर कैसे होता है? डबल बॉन्ड O एंड अ डेटिव बॉन्ड विद ऑक्सीजन, ठीक है? तो यहाँ पे एज यू कैन सी कितना हमारे पास 1 2, ठीक है? एंड देन व्हाट वी आर गोइंग टू हैव, वी आर गोइंग टू हैव अ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और उसकी वजह से क्या होगा? इट इज गोइंग टू बी हैविंग अ बेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है NO2 का, ठीक है? With a lone pair electron, so this is bent, so obviously it is not going to be what? It is not going to be non-polar. Non-polar का मतलब होता है symmetrical distribution of electrons. तो यहाँ पे लोन पेयर है आपके पास, इट इज बेसिकली दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जहाँ पे एक जगह लोन पेयर और इधर बॉन्ड पेयर्स हैं। ऑब्वियसली हियर वी हैव मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है? नेक्स्ट देखिए आप POCl3। POCl3 में क्या होगा? यू विल हैव phosphorus with double bonded oxygen because oxygen की वैलेंसी होती है 2, एंड देन यू हैव 3 क्लोरीन्स। 1 2 3 4 5, ये तो ठीक है, बट एज यू कैन सी दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, है ना? ऑक्सीजन क्या है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दैट इज व्हाई इट इज गोइंग टू हैव हायर डाइपोल मोमेंट इस तरफ होगा। CH2O का क्या मतलब हुआ? H कार्बन एटम, डबल बॉन्ड O एंड देन अगेन H, ठीक है? दिस इज HCHO। तो यहाँ पे सिमिलर है आपके पास ऑक्सीजन में क्या है? इट इज हैविंग मोर डाइपोल मोमेंट। SbCl5 में अगर आप देखिएगा तो SbCl5 में आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा, क्लोरीन 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 एंड क्लोरीन। सारे के सारे हमारे पास व्हाट वी हैव ऑल एवरीथिंग इज व्हाट क्लोरीन हियर, है ना? दैट इज व्हाई जितना इलेक्ट्रॉनिक इधर होगा उतना इधर भी होगा, उतना ऊपर भी होगा और उतना नीचे भी होगा। दैट मींस वी हैव अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ electrons. That is why SpCl5 is going to be the one with non-polar in nature. Please write this down. Symmetrical distribution होता है non-polar, है ना? And वही non-polar में ही क्या होगा? Dipole moment will be equal to 0. ठीक है, please write this down. Write this down. इसको होमवर्क लिखिएगा। Now take this. Correct order of bond angles in the following compounds or species. देखिए जब भी आपके पास बॉन्ड ऑर्डर की बात है, then what you have to see first of all, you have to see the hybridization first of all. Hybridization कैसे पता चलेगा?
हाइब्रिडाइजेशन पता चलेगा आपको किससे, स्टेरिक नंबर से, सीधा सीधा, है ना। यानी कि अगर स्टेरिक नंबर ज्यादा होता है तो हाइब्रिडाइजेशन भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाती है। इन दैट केस यू विल जस्ट फॉलो द स्टेरिक नंबर केस, ठीक है। इन CO व्हाट इज द स्टेरिक नंबर, 2 है। NH3 में स्टेरिक नंबर क्या है, 3 बॉन्ड पेयर एंड देन व्हाट वी हैव 1 लोन पेयर, दैट मींस 4। अब यहाँ पे H2 में क्या है, वी हैव 2 सराउंडिंग एटम्स एंड वी हैव 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, फिर अगेन 4, एंड यहाँ पे भी आ गया 4 आपके पास। नाउ व्हेन वी हैव द सिमिलर नंबर ऑफ, जब हमारे पास क्या होता है, व्हेन वी हैव सेम हाइब्रिडाइजेशन, और जब अब आपके पास स्टेरिक नंबर सेम आ जाए, तब आप क्या देखिएगा, नंबर ऑफ लोन पेयर और नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। बॉन्ड एंगल जो होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर। इफ यू हैव ग्रेटर नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तब क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल हमारे पास कम हो जाएगा। क्यों, बिकॉज लेट अस सपोज यू हैव A यहाँ पे आपके पास ऑल ऑफ देम आर बी, ठीक है। तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन आर सिमिलर, बट इफ व्हेन यू ऐड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, तो लोन पेयर इज गोइंग टू रिपेल दिस मोर, और ये बी बी क्या हो जाएंगे, दिस इज गोइंग टू शॉर्टन, क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। दैट इज व्हाई इफ लोन पेयर इंक्रीजेस, बॉन्ड एंगल इज गोइंग टू डिक्रीज। यहाँ पे आप सीधा देख लेते हैं नंबर ऑफ लोन पेयर किसके पास ज्यादा है। तो कार्बन, अच्छा हियर वी हैव ओनली 4 कंपाउंड्स ना, यही है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया आपके पास, इसमें तो 2 है, तो इसको तो कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। आई हैव टू कंपेयर NH3, I have to compare H2O, and then I have to compare NH4 positive. NH3 has 1 lone pair electron, H2O has 2 lone pair electrons, and NH4 positive has 0 lone pair electrons. ठीक है। अच्छा, इसका मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल हाइब्रिडाइजेशन अगर आप देखिएगा, स्टेरिक नंबर अगर आपके पास क्या होगा, इफ स्टेरिक नंबर इज लो, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, sp है, तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा आपके पास, ज्यादा हो जाएगा। सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड में इट इज आइदर गोइंग टू बी B, C और D, ठीक है। अब आ गया केस NH3 H2O और NH4 पॉजिटिव में किसका ज्यादा होगा। एज यू सी, इफ लोन पेयर ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दैट मींस अगर आपके पास लोन पेयर कम है, इन NH4 पॉजिटिव द लोन पेयर इज लीस्ट, दैट मींस इसका क्या होगा, बॉन्ड एंगल विल बी हाईएस्ट, ठीक है। तो अब NH4 पॉजिटिव में देख लेते हैं, सो वी हैव बी ऑप्शन करेक्ट है ना, बी ऑप्शन में NH4 पॉजिटिव है, बाकी में नहीं है, राइट। तो बी ऑप्शन इज गोइंग टू बी करेक्ट। प्लीज राइट दिस डाउन and then write this also.
Let me know once you're done, guys. Done, guys? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Done. Okay. See. अब आते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इसमें आपको दो चीजें याद कर लेनी है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड दिस इज फॉर टू थिंग्स. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इट टॉक्स अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना. वो नहीं बोलते कि बॉन्ड बन रहे हैं, वो क्या बोलते हैं एटम में वेयर आर द इलेक्ट्रॉन्स, दे से एटॉमिक ऑर्बिटल, and that is why they said so in molecules the electron will be in molecular orbital. Okay, so molecular orbital does not talk about bonds, rather it talks about indirectly it talks about bond in the terms of bond order. ठीक है, but what does molecular orbital theory says, आपको दो चीज याद करनी, case 1 and case 2. when you have number of electron less than or equal to 14, क्या हो, if it is less than or it is equal to 14, then this is the order of molecular orbital. Sigma 1s, sigma 1s star, sigma 2s, sigma 2s star, pi 2px that is equal to pi 2py, both of this will be having same energy level, followed by sigma 2pz, then pi 2p star x, pi 2p star y, and then sigma star 2pz. Now when n is greater than 14, then everything will be same as sigma 1 is sigma 1 star, sigma 2 is sigma 2 is star, but the order of pi 2px, pi 2py, and sigma 2pz is going to change, flip हो जाएगा बस यहाँ पे. Only this portion is different. ठीक है, इन तीनों में ही क्या होगा here, oops, sorry. So what is going to happen in this case? In the second case, when the number of electron is greater than 14, in that case, the sigma 2pz is going to be, the sigma 2pz is going to be having lower energy than pi 2px and pi 2py. Okay. And one more thing that you have to remember is why does this happen? शायद आपसे पूछ ले, सिर्फ आपको नाम जानना है. That this happens because of due to sp mixing. And यहाँ पे आपके पास when n is greater than 14, there is no sp mixing. sp mixing is a long discussion. अभी आप सिर्फ उसके नाम याद रखिए, ठीक है. If n is greater than 14, then there is, if n is greater than 14, then there is no sp mixing. If n is less than 14, then there will be sp mixing. ठीक है. And that is why this, ये general trend है कि सिग्मा की एनर्जी क्या होगी, पाई से कम होगी. सिग्मा is more stable, that is why it will be less, है ना. अब ये जो n, जब ड्यू टू sp mixing होने की वजह से कुछ चेंज आता है. ओके, हाउ विल यू रिमेंबर कि कौन पहले है. ठीक है, एज यू कैन सी पाई पाई साथ में आ रहा है ना, दीज आर टू टर्म्स, पाई पाई एक साथ इक्वल आ रहे हैं. ठीक है, सो दिस टू विल बी कमिंग बिफोर, कब, जब आपके पास n is equal to 14 हो. n 14 से आप याद रखिएगा even, and when it is even तो 2 पहले आएगा, है ना, पाई पाई वाले पहले आएंगे. and when n is greater than 14 तो आप इसको 15 की तरह odd याद रख सकते हैं. this is going to be odd, and that is why a single term that is sigma 2pz will be coming before the pi pi ones. and उसके बाद यहाँ पे तो दोनों के सेम ही ऑर्डर है. ठीक है, सो प्लीज राइट दिस डाउन, इसको प्लीज लिख लीजिए.
Let me know once you're done, guys. Done, sir. अब देखते हैं हम लोग किस केस में, N2 के केस में, है ना। एंड ऑल्सो यू विल लुक एट N2 पॉजिटिव एंड N2 नेगेटिव। ठीक है, ध्यान से करेंगे इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी गाइस, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल N2 हैव? एक नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उस हिसाब से बताइए। दो नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर इन टू नाइट्रोजन्स? जल्दी बताइए, इसमें लेट नहीं कीजिए ना, माइक ऑन कीजिए, तुरंत बताइए। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन नाइट्रोजन? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन? अब बताइए, नीट के एग्जाम देने जा रहे हैं और आपसे पूछा जा रहा है नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन, उसमें कोई जवाब नहीं। ऐसे कैसे चलेगा? यस, अक्सा, फरहत, हिबा, जितने लोगों को आता है आप माइक ऑन करके प्लीज बोले ना। नहीं पता क्या होता है तो होमवर्क देते हैं इसको हम फिर ना। ठीक है, चलिए, ये आपका होमवर्क है ना, कर लीजिएगा इसको। यस और नो, प्लीज टेल मी। Okay, sir. कर लीजिएगा इसको। पता है ये एनबी क्या है, ये एनएबी क्या है, बॉन्ड ऑर्डर क्या है, बॉन्ड लेंथ क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, एग्जिस्टेंस कैसे आएगा? नाइट्रोजन का आपको ये नहीं पता कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? ये अक्सा, टेल मी। अक्सा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन नाइट्रोजन? नो आंसर। एलन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन नाइट्रोजन? एक नाइट्रोजन में बता दीजिए ना, नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? नो आंसर। तो दो नाइट्रोजन में कितने हो जाएंगे फरहत? टू नाइट्रोजन विल हैव 14 इलेक्ट्रॉन। ये क्या बेवकूफी है, आप लोग शांत क्यों बैठे हुए हैं? हाँ, मैमूना, यू डोंट नो द आंसर फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन नाइट्रोजन? यस मैमूना, टेल मी। देयर विल बी नो यूज, अगर आप लोग ध्यान नहीं दे रहे, क्लास में है नहीं, तो फिर कोई फायदा नहीं है इसका। Sir, यस, टेल मी। nitrogen, a number of electrons of nitrogen. नहीं, आई हैव बीन आस्किंग द सेम क्वेश्चन फॉर लास्ट 1 मिनट ना मैमूना, अब दोबारा क्यों बोल रही है सेम बात को? डिड यू नॉट हियर मी? मेरी आवाज नहीं आ रही थी? I did. तो फिर आप आंसर बताइए, क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन नाइट्रोजन? 7, 7। एक नाइट्रोजन में, दो नाइट्रोजन में कितने हो जाएंगे? 14. ये जवाब तो बहुत पहले दे देना चाहिए था आप लोगों को, है ना। या तो आप लोग पता नहीं सोए रहते हैं क्या होता है। चलिए, प्लीज सी हियर गाइस। अब बताइए केस 1 या केस 2, 14 इलेक्ट्रॉन्स। जल्दी बताइए, केस 1 या केस 2? केस 1 या केस 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Case इज one. Case one. केस। ठीक है, तो ये केस 1 का ही पूरा डायग्राम बना हुआ है। हाउ आर यू गोइंग टू फिल द इलेक्ट्रॉन्स? आपको 14 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। सिग्मा 1s में जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो इसको क्या ले देंगे, सिग्मा 1s 2। ठीक, सिग्मा स्टार 1s में जाएगा, है ना। यू आर गोइंग टू फिल द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी ऑफ बाय प्रिंसिपल को यूज करते हुए। सिग्मा स्टार 1s2, फिर 1 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार सिग्मा 2s2, देन 1 और 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार 2s2। ठीक है, अब आप किस कहते होंगे, 2 4 6 8। when you are filling 2px 2py you will fill like this, 1 इलेक्ट्रॉन। अभी आपने कितने फिल किए? 8 फिल किए हैं, आपको फिल करने 6 और। 1 इलेक्ट्रॉन हियर, सेकंड इलेक्ट्रॉन हियर, थर्ड इलेक्ट्रॉन हियर, फोर्थ इलेक्ट्रॉन हियर। ठीक है, कितने हो गए? यहाँ पे है 4, यहाँ पे 8 और यहाँ पे क्या 4, 12 बचे 2। दिस विल बी हियर, इट इज 2px2 5 2p स्टार 2 1। ठीक है, नाउ इसको लिखिए।
Now let us see. The first property is in the magnetic behavior. If you have no unpaired electrons, all the electrons are paired, then you are going to have diamagnetic character. And if you have unpaired electrons, then it is going to be paramagnetic. ठीक है, क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक. इस केस में बताइए डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक. Do we have any unpaired electrons? Yes or no? Is there any unpaired electron? No. No, ना? क्या हो जाएगा ये? This will be diamagnetic, है ना? Now, this is NB. NB means number of bonding orbitals. तो bonding orbitals कितने हैं हमारे पास? If you don't have star, those are bonding. तो ये क्या है bonding? ये क्या है आपके पास? Anti bonding. This is bonding. This is anti bonding. The pi 1 are also bonding, and the sigma 2pz is also bonding because उसमें भी star नहीं है. ठीक है, तो कितने हो गए? 2 और यहाँ पे हो गए 4, 6. Then you have 8, 9. नहीं, एक second. Here we have 6 electron, 8 electron, and then 10 electrons are in bonding. ठीक है, 10 हो गए bonding. Anti bonding कितने हो जाएंगे? Total था 14. उसमें से 10 bonding है तो 4 हो जाएंगे anti bonding. Then we have bond order. What is bond order? Bond order, it is equal to the number of bonding minus the number of anti-bonding divided by 2. Number of bonding is 10 minus 4, that is equal to 6 divided by 2, that is equal to 3. So bond order हो गया आपके पास 3. अच्छा, if you have bond order, that means the atoms will have bond between them. है ना? तो दो atoms हमारे पास नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, इन दोनों के बीच में क्या होगा? बॉन्ड होगा. And if there is a bond, then उसकी existence होगी. So N2 exists. हम कहेंगे क्या? N2 exists because the bond order is equal to 3. उन दोनों के बीच में बॉन्ड है. Now, N2 positive का क्या मतलब है? N2 positive, that means you remove an electron from N2. आपने N2 से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया. In this case, as you can see, there is a unpaired electron, so this will be paramagnetic. Number of bonding electrons में क्या हो गया? एक कम हो गया, that's why you have 9. But number of anti-bonding is still same. आपने number of anti-bonding में कुछ नहीं किया, that means it is still 4. Bond order is going to be equal to number of bonding minus anti-bonding, that is 9 minus 4, that is equal to 5 divided by 2, that is equal to 2.5. Now, if you have 2.5, that means there is bond still. है ना? 0 नहीं है तब तक exist करेगा. ठीक है? N2 minus में क्या होगा? This was N2. ठीक है? And you add 1 electron here. आपने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया. It will be in the sigma 2px या फिर sigma 2py, दोनों में से कहीं पे भी हो सकता है. Here also you are having a paramagnetic. Sorry. Here also you are having paramagnetic because there is one unpaired electrons. Number of bonding, आपने bonding को कुछ नहीं change किया. Bonding is still 10, but the number of anti-bonding has increased to 5. In this case, the bond order is going to be 2.5, and still the molecule is going to exist. Now here we have bond length, bond strength, and bond dissociation energy. अच्छा, bond length क्या होगा? If you have a higher bond order, that means you have more bonds. If you have more bonds, the atoms are nearer to each other. If the atoms are nearer to each other, the bond between the length between those two atoms, bond length क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. That is why N2 will have the least bond. अब आते N2 positive और N2 negative, दोनों में bond order same, right? But in N2 negative we have more number of anti-bonding, और anti-bonding is what? It is inversely proportional to bond order, जैसा आपको दिख रहा होगा, right? Anti-bonding क्या है? It is inversely proportional to the bond order. तो यहाँ पे आपके पास we have more number of anti-bonding, इस वजह से this is going to have the largest. N2 plus का होगा, and सबसे ज्यादा लंबा बॉन्ड किसका होगा? It will be of N2 negative. N2 negative will have the longest bond. Bond strength डिपेंड करता है किसमें? Bond strength depends on कितनी आसानी से बॉन्ड को तोड़ा जा सकता है, कितना डिफिकल्टी से बॉन्ड को तोड़ा जा सकता है. It is inversely proportional to bond length. N2 का सबसे ज्यादा होगा, then you will have N2 positive, and then you will have N2 negative. Similarly, you have bond dissociation enthalpy. ये भी same order follow करेगा. ठीक है, तो please write this down. Let me know once you're done, okay?
उसको लिखिए, उसके बाद बताइए। Done, sir. अब इसको देख लीजिए जरा, ये किसका केस है? O2 का केस है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे O2 के लिए। then O2 will have 16, इस वजह से it is having 2pz नीचे है because n is greater than 14। अच्छा, एक चीज हम बता देते हैं, if you look at N2 negative, तो यहाँ पे number of electron it is equal to what? 15। but you have to look at a neutral species, ठीक है। न्यूट्रल स्पीसीज में आप क्या कीजिएगा, काउंट कीजिएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एंड उसके मुताबिक आप पॉजिटिव नेगेटिव देखिएगा, ठीक है। तो N2 नेगेटिव के केस में नहीं देखना आपको व्हाट इज गोइंग टू बी द बॉन्ड ऑर्डर, पहले तो N2 बनेगा, उसमें आप इलेक्ट्रॉन ऐड कीजिएगा। तो N2 कैसे बनेगा? केस 1 के केस में, हाँ, इट विल यूज द केस 1, उस हिसाब से फिर आप आगे एक इलेक्ट्रॉन डालिएगा, ठीक है। सो यू विल ऑलवेज लुक एट द न्यूट्रल केस। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस और इसको आप होमवर्क कीजिएगा, ठीक है। दिस विल बी योर होमवर्क एंड यू विल सेंड इट ऑन माय व्हाट्सएप, ठीक है। प्लीज सेंड इट ऑन माय व्हाट्सएप बिफोर फ्राइडे। फ्राइडे को इसका टेस्ट होगा ना आपका, तो फ्राइडे से पहले आप हमें ये पूरा भेजिएगा, मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा सबका, नंबर ऑफ बॉन्डिंग, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। ये आपको टेबल भेजना है। चलिए, आई होप यू हैव टेकन स्क्रीनशॉट। अब एक दो सवाल देख लेते हैं, जैसे देखिए, ऑल ऑफ दीज क्वेश्चन, ये सारे के सारे सवाल आपके कहाँ से हो जाएंगे, ये जो हमने अभी किया ना इस टेबल से और इस वाले टेबल को, दोनों को देखिएगा तो आपको सारे सवाल हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बोला हुआ इन्होंने, है ना, कि O2 प्लस O2, O2 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव का क्या है, C2 हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो C2 के लिए आप क्या कीजिएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 12, तो C2 के लिए बनाइएगा। देन H2 पॉजिटिव के लिए आप बनाइएगा, देन O2 नेगेटिव, O2 पॉजिटिव के लिए डायमैग्नेटिक है या नहीं, वो बना के देख लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। देन आइडेंटिफाई अ मॉलिक्यूल व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट, you will make the bond you will make the molecular orbital diagram, ठीक है। एंड उसके बाद आप क्या निकालिएगा, बॉन्ड ऑर्डर निकालिएगा। कैसे निकालिएगा, नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2। बॉन्ड ऑर्डर जिसका 0 आ गया, दैट मींस मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर क्या जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए, तो फिर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। देन नेक्स्ट यू हैव which of the following a diatomic molecular species has only 5 bonds according to the molecular orbital theory। अब इसमें भी क्या कीजिएगा, C2 का, B2 का, BE2 का, O2 का और N2 का, इनमें से क्या कीजिएगा, you will first of all make the, आप क्या बनाइएगा, पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाइएगा। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में आप देखिएगा, N2 हो गया आपके पास, हाँ, यू विल सी हियर, जब 14 होगा ना, सॉरी जब 12 होगा, तब यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेंगे, ठीक है। जब 12 होगा तो इन दिस केस क्या हो रहा है, देखिए, दिस एंटी बॉन्डिंग and this bonding is getting cancelled, this bonding and this anti bonding is getting cancelled, the only bond that is taking place is because of these bonds, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी वजह से बन रहा है, पाई की वजह से बन रहा है ना, and it is only in the case of what, only in the case of C2, ठीक है। एक तो C2 के केस में होगा, ठीक है, और दूसरा केस किसका होता है, B2 का, ठीक है। B2 के केस में भी ओनली यू विल हैव 1 पाई बॉन्ड, C2 के केस में क्या था, यू विल हैव 2 पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एक भी नहीं है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। नेक्स्ट आप देखिए इस सवाल को, हियर आल्सो यू विल टेक CN नेगेटिव, NO एंड CN, इन सब का आपको क्या निकालना है, यू विल कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2, उसमें से जिसका ज्यादा होगा यू विल गेट दैट आंसर। सो एवरीथिंग इज ओनली एंड ओनली डिपेंडेंट ऑन दिस केस 1 एंड केस 2। केस 1 और केस 2 का आप लोग देखिए, उसमें बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग एंड यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट इज दिस वन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर, सेम सवाल है, ठीक है।
So all of these questions are very similar. ठीक है? And it depends on these two tables, N2 positive, N2 negative, and O2 2 negative, 1 negative, O2, then O2 positive and O2 2 positive. ठीक है? तो please take the screenshot of these questions. अब इसमें से जो अगर नहीं हो आपसे तो फिर हमको बताइए. Please take the screenshot. कहाँ पे visible हो रहा है देखिए जरा. अच्छा इसको हम यहाँ रख लेते हैं. So you will have more questions at one screenshot. Wait a second. Take a screenshot. फिर एक ये सवाल बचा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ठीक है, इसमें से जो भी सवाल नहीं हो प्लीज सेंड इट बिफोर फ्राइडे.